Moving on to generating electricity, आपने O levels और IGCSE में you have talked about the basics of electromagnetic induction, how do generators work, coil work या फिर transformer कैसे work करती है. We are going to explain the factors that affect the EMF induced in a coil where there is relative motion between the coil and a permanent magnet. We are also going to explain the factors that affect the EMF induced in a coil when there is a change of current in another coil linked with this coil, and then the Faraday's law, that is EMF is equal to N phi divided by T. We have seen that the movement of a charged particle in a magnetic field causes it to experience a force. Newton's third law of motion reminds us that this force must have a counterpart that acts equally in the opposite direction, and this pair of electromagnetic forces is generated whenever there is a relative motion being a charge and a magnetic field. So magnetic field moving past the stationary charge will create the same force, and the velocity in this expression usually refers to the perpendicular velocity between the magnetic field lines and Q. Also remember that if the movement is not at right angles, then we will need to work out the component of it that is at right angles, including sine theta या फिर वो different जो terms है. This means that if we move a magnet near a wire, the electrons in the wire will experience a force to make them move through the wire. We call it an EMF, and if the wire is in a complete circuit, then the electrons will move, forming an electric current. जब भी याद रखें, whenever a wire will experience a force, that means कि EMF has been induced. And this is what the Faraday's law states. We can also use this principle to generate electricity, and reversing the direction of the magnetic field or the direction of the relative motion, we will reverse the direction of the force on the electrons as well. और यही Faraday's law कहता है that induced EMF is proportional to the rate of change of magnetic फ्लक्स. दिस इज व्हाट हैपेंस इन अ ट्रांसफार्मर एज वेल. आपके पास ट्रांसफार्मर्स के अंदर भी एक प्राइमरी कॉइल होती है, एक सेकेंडरी कॉइल होती है. एनपी का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल. वीपी मीन्स द प्राइमरी वोल्टेज. एनएस मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, एंड वीएस मीन्स voltage in the secondary coil. Induction of EMF was a result of the relative motion between a conductor or coil and a permanent magnet. The magnetic field which interacts with the coil could be produced electrically by another coil, और primary coil में जब EMF induced होगा, then only it will induce an EMF in the secondary coil. और secondary coil फिर वो है जो कि आपको एक output voltage provide करेगी. Input voltage तो फिर भी आपके पास कहाँ है, primary coil के अंदर ही जाएगा. You can here see in a figure C as well that we have a pair of coils linked together by a soft iron core. Iron core क्यों? Because it's a temporary magnet as well. और ये easily magnetize demagnetize भी हो सकता है. Iron is also extremely good at carrying magnetism, and nearly all magnetic field generated by the primary coil. अब magnetic field generate हुई किधर? Primary coil में. Primary coil में magnetic field generate का मतलब है यहाँ पे एक EMF भी induce हुआ है according to Faraday's law. ये वाला EMF induce करेगा voltage को in the secondary coil. This means that the changing magnetic field जब constant है तब कोई EMF induce नहीं होता. But when there is a changing magnetic field, EMF induce होगा और फिर secondary coil के अंदर भी induce होगा. There is a change in flux linkage that is going to generate a EMF in the secondary coil as well. Once the electromagnetic field is stable, there will be no longer any change in the magnetic flux. There will be no further induced EMF. वोल्टमीटर या गैल्वेनोमीटर वापस जीरो हो जाएगा. मैग्नेटिक फील्ड सडनली डिसअपेयर हो जाएगी और आपके पास आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगा. दिस इज हाउ दीज ट्रांसफॉर्मर्स बेसिकली वर्क. यहाँ पे भी द सर्किट एंड द सिचुएशन पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्मर के लिए ही थी. वी हैव यूज्ड इन प्रैक्टिकल टर्म्स. ट्रांसफॉर्मर्स का यूज क्या होता है? दे बेसिकली स्टेप अप द वोल्टेज. जो हमारे घरों के अंदर जा रहा होता है उसको स्टेप डाउन भी कर सकते हैं. ग्रिड लाइंस में डालना है तो उसको स्टेप अप भी कर सकते हैं. So it can be responsible for current surges as well, which can cause damage. And the same principle is more usefully applied in the transformer, which an alternating current is supplied to the primary. As alternating current constantly varies, the electromagnetic field produced by the primary coil alternates, which creates a varying induced EMF, and this EMF will vary at the same rate as the current supplied to the primary as well. तो याद रखें एक सिंपल चीज, जब जब करंट या वोल्टेज वेरी करेगा, मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी, फ्लक्स लिंकेज वेरी करेगा, तो ईएमएफ भी इंड्यूस हो जाएगा. एंड इट कैन बी चेंज्ड एज वेल बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स एज वेल, चेंजिंग द वोल्टेज एज वेल. ये आपके पास इक्वेशन है, ये आपको याद होगी, आपने शायद पहले देखी. वी पी ओवर वी एस इज इक्वल टू एन पी ओवर एन एस. इनमें से आपको कोई तीन चीज़ें दी होंगी.
और आपने कोई चौथी निकालनी हो कि लेट्स से मे बी यू माइट हैव टू फाइंड नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एज वेल। सो दिस इज व्हाट द एसेंशियल जॉब ऑफ ट्रांसफार्मर इज, वोल्टेज को चेंज करना। और कैसे चेंज होगा वोल्टेज ईएमएफ? बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो कि आयरन कोर करेगा, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के दरमियान है। मोर द टर्न्स ऑन द सेकेंडरी मींस अ स्टेप अप, मोर द टर्न्स ऑन प्राइमरी मतलब कि वो स्टेप डाउन होगा। अगर सेकेंडरी कॉइल में टर्न ज्यादा है दैट मीन्स इट इज अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। अगर प्राइमरी में टर्न ज्यादा है दैट मीन्स, और सेकेंडरी में कम है, दैट मीन्स इट्स अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, जो कि आपको वोल्टेज कम करके देगा। अगर एक स्टेशन ने ग्रिड लाइंस में भेजना है, पूरे मुल्क को बिजली देनी है, तो वो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज करेंगे, सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा टर्न्स होंगे। बट जब बिजली ने आपके घर में एंटर होना है तो पूरा वोल्टेज तो नहीं छोड़ सकता ना, तब एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगता है, मतलब कि प्राइमरी कॉइल में ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। ये है वो सिंपल फॉर्मूला आपके पास, एन फाइव ओवर टी। देख लें इसको, यहाँ वर्कड एग्जांपल्स देख लें, बट यू विल गेट इट बेटर वंस वी डू द पास पेपर्स एज वेल।